6th class. How are you all people? I hope that you're all good and keep good health. I am here as your SST teacher. Let's begin today's working. First of all, I'm going to tell you that today our working day is day 6. Now students, I'm going to read the chapter from the portion history, and the chapter is chapter 7, the Khushans. Now I'm going to read this chapter, Arrival, पहुँचना. The Khushans were also the central दरमियानी एशिया they arrived, वो पहुँचे on the subcontinent बर आज़म में through ही हिंदुकश mountain from कहाँ हिंदुकश कोहे हिंदुकश से. Sirsa 50th century they rule a large territory Hadood Arba. Territory means Hadood Arba. For over 200 years पिछले 200 साल से. द खुशान्स एंटर्ड वो दाखिल हुए अंडर देयर रूलर किंग कितफेसिस एंड हिज सन्स कतफेसिस. Defeated the Shakas. It was under the rule of the emperor Kanishka that the Kushans empire reached its peak. पहुँच गया उसके empire उसकी peak पे, उसके निशाने पे, उसका जो हदूद थी वहाँ पर. The empire हुक्मरान Kanishka, also called the second अशोका बिकॉज ऑफ हिज टॉलरेंस, उसकी बर्दाश्त की वजह से. फॉर दिस रिलीजन, उसके मज़हब से ही मेड पेशावर हिज कैपिटल एंड द कंट्रोल्ड वहाँ पर हुक्मरानी करना. द ट्रेड रूट बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट. द रोमन एम्पायर एंड द चाइना ट्रेड आर आर्किटेक्चर एंड कल्चर फ्लोरिश्ड अंडर हिज रूल. द कुशान्स एरा is noted for the rise of the Hellenistic influence मुनक्किस होना on the subcontinent बर आज़म में. A new style of art now, the Greco-Buddhist art containing element answer from the ancient Greek कदीम ग्रीक का and the Buddhist style और Buddhist style का developed during the Kushans rule. Archaeologists have found several state and मखसूस states. Now I'm going to read the words meaning of this chapter to understand this chapter as well. Central दरमियानी territory हदूद अरबा reached पहुँच जाना. Defeated शिकस्त देना subcontinent बर आज़म. Element answer सिविलर मखसूस. Appearance वाज़ेहा capable काबिल. Ancestor हुनरमंद